Hello, hello, chat. What is up? Um, oh my god, Shashwat, what's up? क्या चल रहा है? ओके, तो OBS का करना है ना? Is what I'm thinking. Should we do now? Should we do later? Because अभी मेरा दिमाग थोड़ा like ऑडियो की तरफ ही जा रहा है, तो I think like OBS का little bit later maybe. You know, maybe like I think आज Tuesday है ना? आज Tuesday है? Okay. I think weekend या कुछ को आराम से जब टाइम है तो OBS कर सकते हैं. Yeah, later. Thank you. Because like मैं जोन में हूँ थोड़ा, तो like कुछ काफी like जो वो बुक थी कौन सी also chill stream रखेंगे like little bit study with me जैसे you know बैच बनी करती है तो an introduction to मैं भी 8 बजे खाने जाऊंगा डन. तो ये जो बुक है इसके मैंने पहले 4 चैप्टर पढ़े कुछ बाकी थोड़े रेलेवेंट है. लाइक ये सब डिस्क ड्राइव्स और इन सब में जा रहे हैं कि लाइक तुम ऑडियो को लेके स्टोर कैसे कर रहे हो एंड फिर इंटरफेसेस का कुछ था तो इररेलेवेंट बट फर्स्ट 4 चैप्टर्स आई वेंट थ्रू. इसमें मेनली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पे ज़्यादा करा ताकि लाइक एटलीस्ट बेसिक समझ पाओ डिजिटल ऑडियो के एंड ये भी थोड़ा था. तो इन सब में बेसिकली काफ़ी मैंने नोट्स बनाए ब्रो. मैंने नोट्स बनाए हैं. लेट मी शो यू नोट्स. ये था भाई. तो लाइक काफ़ी मज़ा था कुछ लाइक थोड़ा फिजिक्स थोड़ा मैथ्स और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी थोड़ा फिर देखा. But like proper notes, dude. Like graphs and all, adapters and all. I don't know दिख रहा है नहीं दिख रहा, but like very cool. तो basically मैं sum up करने वाला हूँ कि क्या-क्या मैंने पढ़ा, random चीजें. कुछ काफी cool चीजें थी. Excalibur and मेरे को एक GitHub का PR जो पहले रेस करा open source का वो उस पे वो आया review. तो थोड़े changes उस पे करने हैं जो मैं off stream करूँगा कुछ अभी इसका time नहीं है. Yes, lot of review. Very nice. I'm not sure if sarcastic or not. Oh, okay, not sarcastic. Conflicts. Okay, थोड़ा review पढ़ लेते हैं. Oh my god, compliments. Let's go. Good work. I enjoy that you have good eye for finding them in the code base and this mostly works well. Although I believe you'll be able to simplify the code logic. Thank you. I have answered in the code. But I think that if we don't want to make the form dynamic, we should be able to make keys easy for us to follow. Either with property names, this probably does not do much for us, so renaming it is with fine with me. I don't think this is worth adding complexity in the code for. Okay. I think your current process is fine. If we were to expose transaction as an asset, we could simplify by simply requiring the asset in the view. Okay. Sure that the views don't break, so the string should probably be validated, trimmed, and sanitized. Ah, right. Okay. I think front end पे इसका validation है, back end पे करना है. Sure, the issue is the button should target specific forms to submit, so the nested form should be problematic. Either way, it feels wrong to write in the outer form code to deal with the inner form, so the issue should be handled inside the model. I suspect either stop propagation or a proper user form target. Oh, मैंने try करा था, but इससे नहीं आ रहा था. We could also have other nested forms and could investigate the differences, but I'll check again. And to the asset sort, I think we justify adding entry points for this. Fair. Instead of reading the file and giving the user the object, could we just serve the JSON file? Interesting. This would let browsers cache the resource, and we would just need to make sure the headers change when the translations are updated. Interesting. I don't know if we could send JSON. I mean, technically, कर सकते हैं, but like dynamically or manually validate the object here. I think एक util बना सकते हैं. That is correct. Let's go! Yay! I think ये like अच्छे उस पे था. Instead of maintaining so many variants of translations, instead of maintaining so many variations of translations, type, object, and JSON, could we have one and generate the rest? Okay. If you maintain an object,
we can generate types from the object shape, and we can make the translation JSON file. Okay, got it. Oh yeah. तो इनफैक्ट बेसिकली लाइक आई थिंक इस पे जो कोड का कमेंट इन्होंने बहुत पहले वो था, एक रिव्यू करा था कि लाइक कि एक पर्टिकुलर प्लेस में कमेंट डाल देना चाहिए. आई वाज लाइक इन जनरल मतलब कुछ फ्रेमवर्क अगर पता है कि लाइक कमेंट कब डालना है कब नहीं डालना है, तो उन्होंने काफी लाइक अच्छा बोला. इनफैक्ट जो ये वाली बुक है फिलोसफी ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, जो आई थिंक फ्री बुक है, तो लाइक इस पे कमेंट्स के बारे में कुछ है. बाय 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 बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आराम से बाद में करेंगे, आराम से. If we can, bye bye, आराम से bro. And if you can prevent propagation in the nested form, or simply not use a nested form. Oh, prevent propagation, I don't think I could. I think I should stop propagation. I will have to confirm. Can we disable the submit button if the form is not dirty? Oh yeah, why don't I do that? Since the form is not generated dynamically by the object, do we need to follow the conventions? Since the form is not dynamically the object, we need to follow the conventions. Either the form is dynamic, we need to deal with the keys for renaming them. So we can make a live and convert the property names before submitting. I will have to think about this. Oh, okay. I will have to think iska and maybe ask thoda. But good review, I think. Like, yeah. Free for run. So then, okay. Did I not link? हाँ ये करा तो. Yeah, I will cross check. I will have to discuss on Discord. So okay, good PR review overall. Abhi basically, let's do this. I'm going to kind of dump all my knowledge जो भी सीखा है last के 2 दिन में. कोई भी नहीं देखा, मैं किसको समझा दूँ खुद को. But so तुम्हारा essentially जो भी ऑडियो के रिलेटेड चीजें हैं जो हम अभी कर रहे हैं इतने पिछले आई थिंक 1-2 हफ्तों से, इट्स बेसिकली कि तुम्हारा एक वो है, यू हैव अ, इज देयर नो वेव ऑप्शन हियर? फाइन. इन रियल वर्ल्ड योर ऑडियो इज कंटिन्यूअस एंड एनालॉग, ठीक है. द थिंग इज इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस टू डिजिटल, राइट, यू वुड नीड टू ब्रिंग इन लाइक डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है. So what you would do is the first process of converting something continuous to discrete is called sampling. ठीक है. Sampling is basically where you take this continuous thing and you start breaking it down to like very small bits, basically not like bits जो computer science वाले, but like just bits in general, like English वाला word bit कि मतलब तुम नॉट ब्रेकिंग डाउन बट लाइक तुम एकदम बहुत ही छोटे टाइम पीरियड्स में उस वैल्यू को मेजर करते हो, राइट. तो लाइक फॉर एग्जांपल इधर मेजर करा, देन लाइक इधर मेजर करा, देन इधर मेजर करा, देन इधर मेजर करा, एंड लाइक इट्स नॉट पैरेलल बट लाइक पॉइंट्स समझा, इधर मेजर करा ऐसे करके यू कीप मेजरिंग दैट, राइट. सो दिस इज बेसिकली, एंड व्हाट डू यू मेजर, लाइक ये तो चलो तुम्हारे टाइम, यू वुड अज्यूम कि लाइक तुम्हारे टाइम का एक्सेस है. आ जा भाई. सो लाइक तुम्हारे टाइम के उसमें तुम मेजर कर रहे हो, बट क्या मेजर कर रहे हो? ये वाला पार्ट तुम्हारा, वेयर इज इट, या लाइक इस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या थी, इस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या थी, इस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या थी. सो ऐसे तुम्हारा जो परपेंडिकुलर वैल्यू बन रहा है, बेसिकली तुम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस वेव का या साउंड का मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड, जो टेक्निकली मैग्नीट्यूड को लाइक है, बट बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड उस पॉइंट पे तुम रिकॉर्ड कर रहे हो. Now each measurement over here is called a sample. तो जब लोग बोलते हैं कि मुझे उसका ऑडियो सैंपल चाहिए, it literally means कि तुम लाइक ये वाला सैंपल की बात कर रहे हो कि तुमने एक ग्राफ लिया, एक वेव लिया, उसको ऐसे पॉइंट्स पे थोड़े हर एक पॉइंट पे मेजर करा, एक मेजरमेंट सैंपल है. तो जब लोग आई वांट द ऑडियो सैंपल, उस पूरे ऑडियो पे बेसिकली मेरे को डिजिटल जो नंबर या डिजिटल डेटा है मुझे वो चाहिए. सो दैट इज प्रीटी कूल. सो दैट इज सैम्पलिंग. एंड सैम्पलिंग में technically like I don't think it matters, but like it's थोड़ा fancy. तुम्हारे 2 प्रोसेस होते हैं.
एक तुम्हारा डिस्क्रिटाइजेशन आई थिंक बोलते हैं, दूसरा तुम्हारा क्वांटाइजेशन, जो बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसके एक हो गया कि तुम इसको अलग अलग उस पे तोड़ रहे हो, उसको डिस्क्रीट वैल्यू में कर रहे हो, एंड एक तुम्हारे कि तुम डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे कर रहे हो, राइट? तो तुम आई थिंक उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं कि तुम उस टाइम ब्रोकन डाउन टाइम पीरियड्स में उसकी वैल्यू निकाल रहे हो। आई थिंक if I remember correctly, that was quantization and discretization या कुछ था। तो बेसिकली सैम्पलिंग के दो पार्ट्स है, which is these two। अब तुम्हारे ये सैंपल्स आ गए, ठीक है? नाउ तुम्हारे ट्रेडिशनली अगर तुम लो लेवल पे कर रहे हो तो तुम्हारे जो ये एम्पलीट्यूड मेजरमेंट्स हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? सैंपल का जो है इट इज इन बाइनरी, ठीक है? एंड कौन सा बाइनरी? मल्टी डिजिट, मतलब ऑब्वियसली लाइक तुम्हारा कुछ 0100110, ये तुम्हारे एक पॉइंट पे उस चीज का मेजरमेंट हो गया। अभी इस पे दो चीजें हैं। एक तो इन जनरल अपेरेंटली कंप्यूटर साइंस में तुम्हारे मल्टी डिजिट बाइनरी जो है मतलब लाइक तुम्हारा कोई भी अगर मल्टी डिजिट बाइनरी है, तुम इसको बुलाते हो इंग्लिश लाइक फॉर वर्ड से कह रहा हूँ, अरे भाई यू वुड कॉल मल्टी डिजिट बाइनरी अ वर्ड, एंड इसका जो लेंथ है बाइनरी का यू वुड कॉल दैट वर्ड लेंथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो उसका वर्ड लेंथ है 7। अगर ये मान लो 8 होता तब उस वर्ड को फिर बाइट बोल देते हैं, जिसका वर्ड लेंथ 8 होता है उसको बाइट बोल देते हैं, राइट? सो दिस इज जस्ट लाइक इन जनरल यूजफुल टू नो कंप्यूटर साइंस में। एंड इस केस में तुम्हारा जो भी वर्ड है मल्टी डिजिट बाइनरी चाहो तो एक और ऐड कर देता है। तुम्हारा जो राइट मोस्ट है बिट और तुम्हारा लेफ्ट मोस्ट बिट जो है इसको हम MSB बोलते हैं एंड इसको हम LSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नाउ लेट मी क्रॉस चेक इफ इट इज LSB RSB राइट लेफ्ट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट इज लेफ्ट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट राइट, परफेक्ट, याद है। तो ये एक तुम्हारा हो गया। तुम्हारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स में बेसिकली लाइक ये हो रहा है कि लाइक तुम्हारे जो बिट्स में मेजर कर रहा है एम्पलीट्यूड को एक सैंपल का, राइट? एक सैंपल टेक्निकली, हाँ, बट दिस इज बेसिक्स। अभी इसके बाद क्या है? फिर थोड़ा लाइक बुक में एटलीस्ट एरर करेक्शन से रिलेटेड काफी था कि लाइक तुम्हारे पास अगर नॉइज होता है तो जिटर होता है, तो लाइक जो जिस टाइम पे तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ पे जैसे हम अज्यूम करें यूनिफॉर्मली रिकॉर्ड हो जाएगा ना, बट चलो टाइम तो हम सेम टाइम पे हम मेजर करेंगे, बट तुम्हारे नॉइज और जिटर की वजह से जिस जो एम्पलीट्यूड एक्चुअली उस टाइम पे होना चाहिए वो क्योंकि नहीं है तो गलत चीज रिकॉर्ड हो सकती है, थोड़ा बाद में टाइम का वो हो सकता है। इनफैक्ट ये जो मेजर हम टाइम का कर रहे हैं वो भी एक हार्डवेयर के बेसिस पे कर रहे हैं, हमारा जो नॉर्मल क्लॉक होता है तो उसका कहते हैं इसको सैंपल लॉक या सैंपल फ्रीक्वेंसी क्लॉक, आई थिंक इसके बारे में ट्वीट करता है, बट ऐसे कुछ कि बेसिकली तुम्हारे जो क्लॉक है, मान लो तुम्हारा हम ये क्या कहते हैं, इनफैक्ट के लो भी हटा दो, ये हमारा सॉरी ये हमारा सैम्पलिंग रेट है। सैम्पलिंग रेट बेसिकली हमारे कि कितने सैंपल्स हम एक सेकंड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 44,000 हर्ट्ज अगर हमारा सैम्पलिंग रेट है, इट मींस कि हम 44,000 मेजरमेंट्स एक सेकंड में ले रहे हैं, एंड देन नेक्स्ट सेकंड में 44,000, नेक्स्ट सेकंड में 44,000, नेक्स्ट सेकंड में 44,000, राइट? तो हमें जो हमारा रियल वर्ल्ड में जो चीज एक्चुअली कन्वर्ट कर रही है, जो बेसिकली हमारा ये है, इनफैक्ट इसको ऐसे कर सकता हूँ, एनालॉग टू डिजिटल जो कन्वर्टर है वही तो कर रहा है ना हमारा, कि लाइक तुम्हारा जो भी वेव है रियल वर्ल्ड से लेके तुम्हारा क्या कहते हैं डिजिटल, इनफैक्ट डिजिटली इफ यू रियली वांट, यू नो, वी कैन लाइक एक्चुअली डिजिटाइज बिकॉज लाइक यू नो, तो ये हमारा रियल वर्ल्ड एनालॉग वेव है, ये हमारा डिस्क्रीट डिजिटल वेव है। तो इसके अंदर बेसिकली तुम्हारा ये क्लॉक होता है जो उस 1 सेकंड के अंदर तुम्हें एडीसी को बोलता है कि भाई इस 1 सेकंड के अंदर इस टाइम पे मेजर करो कि लाइक 44,000 मेरे को मेजरमेंट्स मिले 1 सेकंड में। तो लाइक अब 1 सेकंड 44,000 कितना होता है, 1/44 1 2 3, तो इसको करो भाई जितना भी होता है, 1 2 3 4 5 चलो 6, तो 22 म्यू सेकंड या कुछ व्हाटएवर उसका वैल्यू है, आई थिंक म्यू इज 10⁻⁶, बट हर एक उस टाइम पीरियड में बेसिकली मेजरमेंट लो, तो तुम्हारा 1 सेकंड में क्लॉक बार बार ऐसे जैसे पन्नी में कट रहा है,
वैसे तुम्हारा 1 सेकंड के अंदर वो मेजरमेंट का सिग्नल देता है कि ये अब मेजरमेंट लो, अब मेजरमेंट लो, अब मेजरमेंट लो, अब मेजरमेंट लो। तो 1 सेकंड के अंदर वो बेसिकली 44,000 टाइम्स टिक करता है वो क्लॉक, जिससे हम हर एक टिक पे एक सैंपल का मेजरमेंट ले रहे हैं। तो ये था, ये तुम्हारा क्लॉक आता है। फिर क्या था, हाँ कि लाइक 0 एंड ये जो तुम्हारा बाइनरी का ये है, 1 इज तुम्हारा कि नो वैल्यू ऊपर है या नीचे है, 0 इसकी तुम्हारा 0 है। तो डिसाइड कब होता है कि तुम्हारा 0 या 1 है, तो वो तुम्हारे एक थ्रेशोल्ड पे होता है कि लाइक इस थ्रेशोल्ड के ऊपर तो 0 या सॉरी 1, इस थ्रेशोल्ड के नीचे तो 0। वो थोड़ा मतलब कन्वर्जन के उसमें तो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट लाइक गुड टू नो। फिर एरर करेक्शन के बारे में थोड़ी चीजें थे। एरर्स के बारे में बाय द वे याद है, 2 टाइप के एरर, वैसे तो काफी टाइप के हैं, बट जो मेरे को 2 याद है, एक तो बिट एरर है कि तुम्हारा एक बिट ऑफ है, और एक तुम्हारा बर्स्ट एरर है कि तुम्हारे सेट ऑफ बिट्स ऑफ है। सॉरी, सेट ऑफ बिट्स ऑफ है। बेसिकली कि अगर यहाँ पे तुम्हारा ये जो है, मान लो यही, इसको 1 1 कर दो, तुम्हारा ओरिजिनली ये था नंबर, ये गलती से 0 हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, नॉइज है कुछ, एक बिट ऑफ हो गया, तो उसको तुम कैसे मेजर करोगे? बिट फ्लिप करके कि क्योंकि तुम्हारा बाइनरी तुम्हारे 2 स्टेट्स है, अगर तुम्हारे सेट ऑफ बाइनरी में कुछ एरर है तो तुम उसको सॉर्ट करने के लिए बिट फ्लिप करते हो, थोड़ा पैडिंग डालते हो लेकिन रिडंडेंट कोड के साथ। तो उसके बारे में कुछ मेंशन था। फिर बर्स्ट एरर में हो गया कि तुम्हारे लाइक मान लो सेट ऑफ बिट्स है, यहाँ पे ये 1 है, मान लो कि तुम्हारे सेट ऑफ बिट्स लाइक करप्ट हो गए, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो लाइक तुम्हारे अब सेट ऑफ, अरे भाई लाइक ये बेसिकली खराब हो गया। तो जैसे तुम्हारे सीडी में जो स्क्रैच हो जाता है, ये बर्स्ट एरर वही होता है कि अब जब तुम्हारा कैसेट रीडर या सीडी रीडर उसको जब रीड कर रहा है उस डेटा को, तो यहाँ पे सेट ऑफ बिट्स जो ओरिजिनली थे, क्योंकि स्क्रैच आ गया तो खराब हो गया, तुम्हारा बर्स्ट एरर हो गया। तो दैट वाज प्रीटी फन। फिर व्हाट एल्स, हाँ फिर एक था कि कंसीलमेंट करते हो जब एरर करेक्शन ज्यादा नहीं हो, तो कंसीलमेंट बेसिकली तुम्हारे नेबरिंग क्या कहते हैं बिट्स से तुम उसका वैल्यू, बिट्स या एम्पलीट्यूड कि तुम उस पर्टिकुलर, हाँ आई थिंक नेबरिंग तुम्हारे एम्पलीट्यूड से तुम उस पर्टिकुलर पॉइंट के एम्पलीट्यूड को अप्रोक्सीमेट करते हो। एंड इवन तुम्हारा जो पूरा प्रोसेस है एनालॉग टू डिजिटल का, वो भी एक अप्रोक्सीमेशन है। तुम एक्चुअल अगर तुम्हें एकदम एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो तुम्हें फिर मतलब लाइक इन्फिनिट टाइम में ही मेजर करना पड़ेगा हर चीज को, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा अप्रोक्सीमेशन है, बट एट द एंड ऑफ द डे अप्रोक्सीमेशन है। तो अगर ये मान लो टाइम पीरियड ज्यादा हो गया एंड तुमने ठीक से वेव को मेजर नहीं करा, तो तुम्हारा लाइक बेसिकली जो ऑडियो डिजिटल से सॉरी एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट हो रहा है वो तुम्हारा गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा नाइक्विस्ट शैनन का जो सैम्पलिंग थ्योरी जो उस दिन हम करते स्ट्रीम पे, वो आ जाता है, जो आई विल गेट टू दैट इन अ मोमेंट। हाँ, तुम्हारा चैनल एक था कि लाइक कौन से पाथ पे तुम ऑडियो सेंड कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है कि तुम्हारे लेफ्ट राइट पे अलग अलग साउंड्स आते हैं या अलग अलग वॉल्यूम के साउंड्स आते हैं, वो बेसिकली तुम्हारे 2 चैनल्स के थ्रू तुम्हें सॉन्ग भेज रहा है। एक तुम्हारा लेफ्ट चैनल, एक लेफ्ट एक राइट, एंड तुम्हारे चैनल टाइप लाइक एक नंबर है राइट के लिए, 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल ऐसे करके। तो अगर 1 चैनल होता है तो सारे डेस्टिनेशंस पे एक ही डेटा जाता है, लाइक जो भी पाथ है वो एक ही है आउटपुट के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे 2 चैनल है लेफ्ट राइट, तो तुम्हारे लेफ्ट पे लग जा रहा है, राइट पे लग जा रहा है, तो दैट इज योर चैनल, जो ठीक है। अब तुम्हारा ये कि तुम किस टाइम पीरियड पे मेजर कर रहे हो, एंड तुम्हारा बेसिकली कितना तुम्हारा मेजरमेंट होना चाहिए कि तुम्हें एक्यूरेट डेटा मिल रहा है ओरिजिनल तुम्हारे एनालॉग वर्ल्ड में जो तुम्हारा ऑडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल है। इसके लिए नाइक्विस्ट और शैनन करके है, 2 अलग लोग हैं, बट बेसिकली उन्होंने कुछ मैथ्स करी एंड टर्न्स आउट उन्होंने मैथमेटिकली, क्योंकि थियरम है तो उन्होंने मैथमेटिकली बोला कि भाई सुनो, ये जो तुम्हारा, कैन आई नॉट गेट लाइन, व्हाई इज दिस देयर, आई वांट लाइन, कि भाई तुम्हारा जो ये है, कोई भी तुम्हारा जो वेव है, अगर तुम्हें उसको करेक्टली मेजर कर पाना है, एंड ये तुम्हारे 2 प्रोसेस में एक होता है। एक तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हो गया कि तुम एनालॉग को डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन हो गया कि जब तुम उसको सुन रहे हो राइट, कि तुम डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं बेसिकली। तो इस केस में तुम्हारा जो एसेंशियली सैम्पलिंग रेट है, ठीक है, इट शुड बी ट्वाइस ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ तुम्हारा वेव। ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, बट ट्वाइस ऑफ तुम्हारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसको डाल दूं
सैम्पलिंग जो तुम्हारा रेट है इट शुड बी एट लीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ तुम्हारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द वेव। अब इसको या तो विजुअली देख सकते हैं, इसमें तो चलो कंटिन्यू लाइक यूनिफॉर्म वेव है, बट मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ा स्लो है, तो यहाँ पे तुम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस या ज्यादा चाहोगे तुम्हारा सैम्पलिंग रेट, ताकि तुम वेव को ठीक से कैप्चर कर पाओ एंड उसको डेटा को रिकॉर्ड कर पाओ। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से समझने का है कि तुम्हारा कोई भी जो वेव होता है रियल वर्ल्ड में, लाइक तुम्हारा एक नॉर्मल वेव का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ए ओमेगा कह रहा हूँ, ए साइन ओमेगा टी एक्स ओमेगा टी फ्रीक्वेंसी क्या था प्लस फाई या कुछ था ना, चलो अभी के लिए ओ से कर लेते हैं, जीरो का क्या है, ठीक है फाई, ये तुम्हारा फाई है, ओमेगा टी हाँ बाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना, ठीक है। तो तुम्हारा एक नॉर्मल वेव का जो फॉर्मूला है वो ये है, राइट। बट अभी तुम्हारे जो रियल वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स वेव्स होते हैं उस पे क्या होता है कि इट इज नॉट सो सिंपल, राइट। तुम्हारा ये a1 साइन t1 प्लस फाई 1 ठीक है, अरे भाई फिर तुम्हारा हो गया एक a2 साइन ओमेगा t2 प्लस तुम्हारा जो ये है इसका 2 फेज 2 a3, चलो लिख ही देते हैं, 3 साइन ओमेगा t3 प्लस फाई 3, राइट। तो एंड मतलब ऐसे कंटिन्यूएशन, तो तुम्हारे बेसिकली अलग अलग वेव्स का सम जब लोगे तो तुम्हारा फाइनल जो वेव है वो बनता है, जो इसका फॉर्मूला ये होगा, एंड इसको एक सिंपलीफाई करो जो भी बकवास, बट तुम्हारा कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन वेव्स, राइट, इट्स अ सम ऑफ साइन वेव्स। सो इसको जब तुम मैथमेटिकली करोगे कि भाई तुम्हारा इस सेंस में सैम्पलिंग रेट शुड बी ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे तुम्हारा आई थिंक ओमेगा या t1 इन दोनों में से कुछ तो फ्रीक्वेंसी था, नाउ आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक इट इज ओमेगा, बिकॉज ओमेगा तुम्हारा इफ आई रिमेंबर करेक्टली हाँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी था टाइम पीरियड, आई थिंक यू नो, अब ऑब्वियसली मैं गूगल करके कंफर्म कर सकता हूँ, बट लाइक फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर एंड आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, तो फिर 2 पाई बाई टी अगर तुम्हारा ओमेगा क्या था तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनफैक्ट कर ही लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला 2 पाई बाय व्हाट एम आई रॉन्ग, रेडियन भी, राइट, रेडियन तुम्हारा ओमेगा इज इक्वल टू v by r, is it not 2 pi t, oh हाँ 2 pi f bro, is angular frequency equal to omega, हाँ I think हाँ ordinary frequency is equal to 1 upon time period, yeah, तो basically यही, so yeah, in fact इसको 2 pi by t की जगह ओमेगा इज इक्वल टू 2 into pi into f, राइट। तो तुम्हारा ये जो फ्रीक्वेंसी इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन सब में से उसका एटलीस्ट ट्वाइस होना चाहिए तुम्हारा सैम्पलिंग रेट, ताकि तुम डेटा को ठीक से मेजर कर पाओ, कैप्चर कर पाओ। अभी व्हाट एल्स, हाँ अब तुम्हारा देखोगे कि चलो तुम्हारा ये तो हो गया कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो तुम्हें कैप्चर करना है उसका तुम्हारा सैम्पलिंग रेट इनटू 2 होना चाहिए, राइट। तो अब तुम अगर सोचोगे तो ह्यूमन का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लाइक ह्यूमन ईयर का कब तक कैप्चर कर सकता है, इट इज अराउंड 20,000, राइट। ह्यूमन ईयर का तुम्हारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैप्चर कर सकता है इट इज अबाउट 20,000, ठीक है, हर्ट्स। अभी इसके ऊपर तो हम वैसे भी सुनाई नहीं दे सकते, एंड काफी लोगों को तो लाइक 60,000 के बाद ऐसे भी ज्यादा क्या सुनाई देता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम पूरे ह्यूमन ईयर के रेंज को कवर करें तो एटलीस्ट अगर ट्वाइस ऑफ ह्यूमन ईयर का रेंज होना चाहिए, तो मेरा सैम्पलिंग रेट शुड बी 44, वैसे तो 40,000 है बट लाइक 44,000, क्योंकि एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ होना चाहिए। तो तुम्हारे जो सीडीज है जो मैं भूल गया उसका फुल फॉर्म क्या है, बट तुम्हारा ये एटलीस्ट सैम्पलिंग रेट इतना होना चाहिए ताकि तुम ह्यूमन ईयर की उसको कवर कर पाओ, फ्रीक्वेंसी रेंज को जितना सुन सकता है। अब मैं चाय बनाया तो मैं थोड़ा चाय पीऊंगा।
कोई है भी क्या स्ट्रीम पे कि लाइक खुद ही से बात कर रहा हूँ? There is no one on the stream. It was only Shashwat. Crazy. भाई, oh my god, wow. तो यह तो लाइक बेसिक्स तो क्लियर हो रहा है. तो ये था हमारा नाइक्विस्ट थ्योरम, एंड इसको नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट बोल देते हैं, या नाइक्विस्ट रेट बोल देते हैं. ठीक है, तो दैट इज अबाउट तुम्हारा जब हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, राइट. तो अभी इससे क्योंकि तुम्हारे हर सेकंड पे 44,000 मेजरमेंट्स और ये सब है, तुम्हारे टाइम डोमेन में रिकॉर्ड हो रहा है डेटा, एंड लाइक उसके बारे में भी और कुछ था कि प्लेनर बफर्स होते हैं और इंटरलीव्ड बफर्स होते हैं. वो तो तुम्हारे चैनल से रिलेटेड था, बट नॉट रेलेवेंट. और क्या था चीज इसमें? फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. तो बेसिकली तुम्हारा जो एफएफटी है, ये तुम्हारा फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म है. इनफैक्ट 3 blue 1 brown की वीडियो भी है इस पे, जो मेरे को समवॉट समझ में आया. उस पे लाइक थोड़ा था, मेरे को लाइक दिमाग लगाना पड़ा, जो मेरे को अभी भी 100% इन डेप्थ क्लियर नहीं है फूरियर के बारे में. बट लाइक बेसिक आइडिया की तुम्हारे टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है साउंड की रिकॉर्डिंग में. अब तुम्हारा बेसिकली जो हमारा वो मेथड था, गेट बाइट फ्रीक्वेंसी डेटा, व्हिच इज दिस वन. analyzer node dot get byte frequency data, जो हमारा एक बफर लेता है. ठीक है, एंड कौन सा बफर लेता है? हमारा एक uint8 बफर लेता है, क्योंकि तुम्हारा बाइट है. अगर इसको फ्लोट में चाहिए तो तुम्हारा गेट फ्लोट फ्रीक्वेंसी डेटा होता, राइट. तो ये हो गया तुम्हारा डन. बेसिकली ये तुम्हारा अंडरनीथ द हुड फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहा है, ताकि और जो भी डेटा मिल रहा है उसको इस पे डाल रहा है. अब फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में वो भी तुम्हारे डिस्क्रीट वैल्यूज ही तो ले रहा है. तो तुम्हारे कितने सैंपल्स या कितने मेजरमेंट्स उसको लेने चाहिए एक उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ताकि वो अपना फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए. तो ये जो लेंथ है कि कितना उसको लेना चाहिए, इसको बोलते हैं एफएफटी साइज, कोड में एटलीस्ट. एंड ये तुम्हारा यूजुअली होता है 2 के पावर्स में. 2 to the power कहाँ गया? Where is upper? Bruh. अबे ऊपर वाला कहाँ गया? हाँ, 2 to the power n कुछ इसका यूजुअली होता है. तो तभी जो डिफॉल्ट है ब्राउजर में उसका 2048 है. लेकिन इसका जो है कि लाइक मान लो ये है तुम्हारा एफएफटी साइज की, जब तुम फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो कितने साइज के सैंपल्स पे फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है, वो तुम्हारा एफएफटी साइज है. और जो तुम्हारा फाइनल आउटपुट होता है, जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डेटा होता है, वो तुम्हारे बकेट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिन्स, राइट. कौन से बिन्स? फ्रीक्वेंसी बिन्स. फ्रीक्वेंसी बिन्स, ठीक है. तो इसका जो ब्राउजर में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी बिन काउंट करके, फ्रीक्वेंसी बिन काउंट या फ्रीक्वेंसी काउंट करके, जो तुम्हारा हमेशा होता है एफएफटी साइज by 2. अब by 2 क्यों है? क्योंकि अपेरेंटली जब तुम फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हो जो आउटपुट होता है वो सिमेट्रिकल होता है, तो सिमेट्री को लाइक करके तुम by 2 बेसिकली कर रहे हो. तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बिन काउंट हो गया. एंड एक बिन का जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, तुम्हारा मान लो ये तुम्हारे बिन्स है, राइट. तो ये बिन का जो डेटा आ रहा है, इसका जो मिनिमम होगा वो तो तुम्हारा 0 से स्टार्ट होगा फ्रीक्वेंसी. जो मैक्स वैल्यू तक जाएगा वो है तुम्हारा नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी, जो इस हमने जो पहले कहा, अगर 44,000 हमारा सैंपलिंग रेट है तो 20,000 22,000 हमारा नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया. तो जो हमारे बिन का फ्रीक्वेंसी, जो हमारे फ्रीक्वेंसी बिन्स है, उसका जो मैक्स फ्रीक्वेंसी होगा वो 0 to नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी होगा. तो इस केस में 22,000, ठीक है. और ईच बिन जो होता है वो तुम्हारा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कवर कर रहा है. तो ये तुम्हारा अगर इस ही डेटा सेट को ले तो 0 to 43 हर्ट्ज. तो इसमें कितना एनर्जी है? एनर्जी माने कि इस पे कितना एम्पलीट्यूड है बेसिकली तुम्हारे सिग्नल का. एसेंशियली इस फ्रीक्वेंसी पे कितना तुम्हारा एम्पलीट्यूड है. तो लाइक तुम अगर बार ग्राफ पे तुम जो देखते हो कि ऐसे जो बन रहा है, वो है कि हाँ भाई तुम्हारे ये जो फ्रीक्वेंसी बिन्स बने हैं उस पे एनर्जी कितना, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसके बेसिस पे तुम्हारे वो ऐसे जो स्पेक्ट्रम है वो ऐसे बेसिकली लाइक वो ये कर रहा है बेसिकली कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी
बिन्स जो है उस पे जो एम्पलीट्यूड है उसको लाइक, और तुम्हारे टाइम पे चेंज होता है, जैसे तुम्हारा वेव है, तुम्हारा इस पॉइंट पे तुम्हारा ये जो ग्राफ है ऐसा डिफरेंट दिखेगा, इस पॉइंट पे तुम्हारा डिफरेंट दिखेगा, इस पॉइंट पे तुम्हारा डिफरेंट दिखेगा, तो ईच तुम्हारा टाइम जो जा रहा है उस पे तुम्हारे जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ है वो बन रहा है, तो तभी वो जो स्पेक्ट्रम है वो ऐसे दम 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 ऐसे करता है। तो या दैट इज प्रीटी मच ऑल ऑफ इट दैट आई रिमेंबर। एंड जो लास्ट टीम में था कि व्हिटनी ह्यूस्टन पे हाई फ्रीक्वेंसी पे आ नहीं रहे थे, ऑफ कोर्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी बिन्स है ये तो जा रहा है तुम्हारा 0 to 22,000। अब वो जो गाना है वो बेचारा गाना ब्रो वो तो लाइक इधर तक रेंज में हो गया खत्म, ये तो 22,000 है ब्रो, ये तो तुम्हारे लाइक कहा तुम ईयर के हियरिंग रेंज में जा रहे हो, तो जो तुम्हारे एक्चुअल माइक से हम इनपुट दे रहे हैं तो एक्चुअली इतने रेंज में कवर हो रहा है। तो हमें इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि ये सब तो 0 आ रहा था, लाइक ब्रो ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी आ नहीं रहे थे, बट आ रहा है, इट्स जस्ट कि एक रियलिस्टिक रेंज में आ रहा है, इट्स नॉट कि यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि उतने फ्रीक्वेंसी का तो जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस फ्रीक्वेंसी के साथ खेलना है एंड इसके अकॉर्डिंग अब हम चीजें करेंगे। एंड एक और चीज जो मैं गलत कर रहा था, नॉट एग्जैक्टली गलत बट लाइक एफिशिएंट, was कि मैं divs को LED की तरह यूज कर रहा था, बट टर्न्स आउट जो MDN के एग्जांपल्स वगैरह पे भी है उसमें तुम्हारे कैनवस यूज करा है, नॉट divs। एंड मैंने थोड़ा एक प्रोटोटाइप बनाया यू नो बहुत लाइक आज ही, जिसमें कैनवस के साथ ट्राई करा एंड ब्रो मच बेटर। एंड मतलब आज जीपीटी मैंने करा, क्लॉड नहीं, क्लॉड लाइक मेरे को इतना आई डोंट थिंक राइट आंसर दे रहा था, बट जीपीटी जब मैंने करा तो काफी मेरे को चीजें क्लियर हुई एंड वो बुक ने काफी हेल्प करी। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। अब ऑडियो वाइज तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब लाइट को कैसे मैनिपुलेट करना है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, तो उसके लिए थोड़ा कैनवस वगैरह की नॉलेज देखनी पड़ेगी। तो ओ माय गॉड मेरा सिर्फ गला दिख रहा है, वाओ दैट्स क्रेजी डूड, लिटिल बिट रियलिस्टिक, यू नो इट्स लाइक फेस टू फेस कन्वर्सेशन। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस टीम। थोड़ा मतलब जो ये हमने करा था, दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ, इसमें बेसिकली हम करेंगे एक नया ब्रांच, गेट चेकआउट V2 प्रोटोटाइप, ठीक है, जिसपे तुम्हारा ये सब हटा दो, एक्चुअली सब हटा देता, यस सब हटा दो। वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। टेक्सटाइल्स की भी जरूरत है नहीं, थोड़ा क्लॉड वर्ड खोलेंगे साइड में, because I do have questions to ask and like थोड़ा vibe code in the sense कि like meaningless tasks basically। तो तुम्हारा index.js है, मेरे को HTML चाहिए, what's up Claude? Yeah, तो that is the scene। Also खाने से याद आया, has he by chance, oh shit, एक सेकेंड, one second chat, important message। anything else? नहीं, और कुछ है। So this is basically जो भी ऑडियो चीज करी है उसका सम, एंड इनफैक्ट लाइक इनके जो डॉक्स है उसमें भी क्या कहते हैं, जो डॉक्स है आई एम फॉरगेटिंग, उसमें मतलब काफी अच्छे एग्जांपल्स है, ये कैनवस वगैरह के साथ खेलना मिलना, तो वी कैन डू लाइक सम स्टफ। अभी पॉइंट इज, अब आई डोंट थिंक लाइक क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक अब साउंड अपना इशू है, अब इस बेसिकली कि रियल टाइम साउंड को लेके उसको लाइक रियल टाइम लाइट में लाइक समझ रहे हो, पहले साउंड का इशू था, अब साउंड भी समझ में आ गया थोड़ा बहुत, तो उसको अब बेसिकली कोड में करना है कि एक्चुअल प्रॉपर्टीज लेके एक पर्टिकुलर रेंज में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, क्या कहते हैं लाइट के उसमें, एंड लाइक तुम्हारे बेसिकली नंबर्स फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर है, तो लाइक ऐसे भी हम उस नंबर्स को यूज करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। So that is the idea basically।
या अरे भाई हाँ, दैट इज द आइडिया। काफी चीज बनाई ब्रो। एनीवे, अब द थिंग इज, आई वांट इट टू बी लाइक अ स्टडी विद मी स्ट्रीम। तो मैं म्यूट पे जाने वाला हूँ, एंड लाइक आई डोंट थिंक कोई आ भी रहा है, तो लाइक एंड शाश्वत भी खाने गया, तो मैं तो काम करते फिर अपना, मैं अपने फिर गाने लगाऊंगा बैकग्राउंड में, एंड लाइक वी कैन वाइब, यू नो व्हाट आई मीन। तो या चलो, आई एम गोइंग ऑन म्यूट एंड आई एम स्टार्टिंग। तो इनफैक्ट क्या कहते हैं, डू आई नीड टू पुट ऑन एनी ऑफ माय सॉन्ग्स? आई डोंट थिंक सो। तो बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर स्ट्रीम, बट आई कैन गो ऑन म्यूट। सो अभी क्या टाइम है? 8:16, राइट? 30 मिनट का करते हैं, और मे बी 40 मिनट्स, बेसिकली 8:45 तक लेट्स डू, एंड लाइक फिर देखते हैं, या बीच में अगर चैट फैट दिख गया तो लाइक ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, बट लाइक फोकस। What's up, Ujjwal? Sorry, we were just like focusing थोड़ा, तो like you know background में लगा लो, काम करते हैं, like you know co-work together basically. तो yeah, thanks for joining by the way.
What's up, Daksh? क्या चल रहा है? We are doing a little study with Mystery. So if you also are coding or doing just like background में डाल के ना, we can like vibe together. That's why I'm on mute. Um, yeah. So I can just do that. So, um, choose number. Um, frequency. What is the difference between frequency and energy? Do I even want to send that as a question? Yeah, I would. The thing is, this is wrong because this does not give me the what do you say? Let's do one thing. Frequencies. Um, okay, frequency data array. Frequency data array. Whoa. So amp data array. Right. Get time byte time domain data जिसमें हम amp भेज रहे हैं. Amp data. This would be frequency data. Do we do it with a function or what? I don't think we should do it with a function. Extract frequency features and then amplitude. Extract amplitude. So इसमें मैं RMS कर रहा हूँ, right? Before we do that, get byte time domain data. Copy the current waveform or time domain into if the array has fewer elements. So it returns, yeah, obviously. Question is, yeah, but then how do you, where is the, like, isn't it, okay, this is what we're going to have to learn. मैंने frequency पे ज़्यादा करा. If we're using get byte time domain data, then what are we getting in? We're getting exactly amplitude at different sequence, but isn't that supposed to get like, I don't think we're getting that. Yeah. Amplitude over time, not frequency. Take out a snapshot of the raw waveform at that exact moment. So over time. So उस moment पे it's taking a screenshot, which like this is gonna keep on happening. So it's like screenshot. So if we want the amplitude, ये तो हाँ बोलेगा ये, just to confirm. Okay. Oh, we have to like, oh yeah. Because like 0 to 255, right? Because it's event 8. Yeah, and the actual energy or the perceived loudness are oscillating around 128 center point. Because like ऐसे जा रहा है, right? So yeah, okay. So we have to 128 सबसे. Why are we dividing by 128 is the question.
लेट्स सम 0 लेंथ के लिए सबको नीचे लेकर आओ एंड देन दैट अपॉन or root means square, right? Yeah, but like I'm not going to do it that way. I'm going to do it my way. Extract frequency features. Extract amplitude. Presence, time domain data, presence, frequency domain data. This would return a number, which would be the amplitude, right? Function root square. Oh, so I guess we can do it here only, right? Performs RMS on time domain data to get amplitude. So we have that. Const elect sum is equal to 0 for let I is equal to 0, I is less than data array dot length, obviously I plus plus. Now we want RMS, right? Root mean square. सबको पहले square करते हैं. Now we want the value. So const val should be अपना data array का ith value minus 128 because 255 so like yeah 128 127. Interesting. Okay, so each value is now going over नीचे इसका square const squared val so सबका square and then root mean. Oh, we're doing it that way. Squared. Yeah, let's do sum plus is equal to squared. So now we have सबका all the values are squared and सबका sum मिल गया. Now we would want this. What would we want? We want the mean and the root. So amplitude math dot square root of your squared values, right? Squared values upon your length. तो तुम्हारा mean हो गया. Root mean square करा, उसका mean लिया and then so the question is, am I missing like यहाँ पे दो बार आ रहा है, right? What am I missing something by any chance? Why is it dividing by? Oh yeah, oh, look at me, I'm so smart. Oh. I have done this. How is there a bug? Which is the you want to divide the sum. Oh, my bad. Sum, yeah. Correct. The correctly centering around, squaring each sample.
why did you divide by 128? It's a question. India wants to know. The world wants to know. Oh, I do like that idea, dude. To divide, especially if you're comparing audio engineering convention thing, most audio processing expert expects signals, but if you're not, I do like that. I do like that. I do like that. I do like normalizing that. It's fine, guys. It's fine. I do like it. I like. नहीं अच्छा लगा तो like remove कर देंगे. But yeah, I like that. So we have an amplitude, which should be a number, correct? Then we have a frequency, which we have to like get them out. So we have that. Here's the thing. We could just pass that, you know. Actually, it's fine. That's like a nitpick. इतना नहीं करते. We have you there is the question. Oh my god, who is watching? It's crazy too. Anyway, तुम अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हो? Crazy, bro. My bad. Oh. Okay, so we got the amplitude. Now we have the frequencies, which is we're gonna have, what is it? Bass is gonna be something. Then we have treble. Then we have a pitch. What is it called? What are the frequency ranges that I can extract called? Yeah, Nyquist frequency. Let's go. Yeah, but like, no. Sub bass, high treble. So it's called bass, mid, and treble. So just literally called mid. Interesting. So let's do 0 to 250 hertz. Realistically, if I were to be record from my mic and sing a song with a guitar, what frequency ranges should I target so that I can meaningfully do operations with them? एक रफ मतलब टारगेट मिल सकता है. Okay, 80 to 250. What about like okay, so we can do, let's do that actually. Sub bass. I think we'll take a slice from here if I'm correct. So let's do something like this. Okay. Const range. Actual range. What range? Equal to sub bass, which would be 0 to what? 80. Right. Sorry. Sub bass के बाद bass, which would be 250. Okay. Low bass or sub bass? Yeah, it's fine. Low mids would be up to 800. Then we have mids, which would be up to 2000, I believe, 3000. Then we have
high mids. Okay, high mids up to 8,000. I think 8,000 तक ज़्यादा नहीं हो रहा. I don't think उतना होगा, like realistically, you know. But ठीक है, let's see. Guitar harmonic sparkle, voice, vocal breathiness. Okay. And we have highs below 80. Oh, ultra highs. Okay, fair. I guess we can believe that. And then we have highs 15,000. But if we're gonna go with that convention, let's just do it here also, you know. तो सब बेस हटा देते हैं, इन चारों पे लेते हैं 5, 1 2 3 4 5. Okay. Yeah. So now the benefit of that is कि हट जाओ. Basically data array dot slice 0 to range dot what was it called? Base. What? Whoa. Range dot, yeah, start to end. Oh, is range already a thing? Frequency range. Frequency range dot, yeah, there you go. Base क्या? Const base is equal to data array dot slice from frequency range base से लेके low frequency range low mids, ठीक है, and this is exclusive, so that's like a benefit. Const low mids is equal to, in fact, I can just like copy. My God, yes, low mids. Now we can ulti putty. Low mids. My God, bro, मैं type करना क्यों भूल गया? Can you please? Thank you. My God, cringe, bro. Base. Oh my God, Shashwat, you're back. I'm back. Well, things so dead. Am I literally only one here? Correct. 2-3 लोग आए. उज्जवल और दक्ष आए. So yeah, I don't think मैंने announce करा है तो like, and plus like bro, Tuesday शाम को है. I don't think लोग आने वाले हैं. ठीक है, तो like, you know, it's fine, guys. You know, like I don't think कोई आ रहा है. My God. बस ब्रो पता है मैं ट्विटर पे बस बोल देता हूँ कि मैं स्ट्रीम करने जा रहा हूँ, बट मैं लिंक मैं लिंक नहीं डालता हूँ, बिकॉज लाइक आई डोंट नो, आई थिंक अभी थोड़ा जल्दी है एंगेजमेंट फॉर. ठीक है ब्रो, ठीक है. आलू भुजिया स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम बाय द वे, यू नो, जस्ट सेइंग. या चाय स्पॉन्सर्ड, यू नो. मैं कुछ गलत कर रहा हूँ बाय द वे फ्रीक्वेंसी रेंज पे. 82 250 is अपना base, low mids is 250 to 800, mid है हमारा 800 to 3000, 3000 to 8000 and 8000 to 15,000. Oh, highs. ठीक है, bad naming convention. No, but 15,000 तो नहीं 8 to 15,000. ना ब्रो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. 8 to 15,000 is अपना कहाँ गया?
8 to 250. Okay. इनफैक्ट साइड में ये लगा देते हैं 252 oh 80 to 250 my bad crazy I think मैं पता है क्या गलत कर रहा हूँ okay this is better I like this Oh my god, hi Raj. Okay. Have you met Raj? 800 to 3000, but like that. Whoa, 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 whoa. $8,000 to 15,000. Yes, much better. Oh, caps lock, my bad. So the thing is, फिर इसके according actually let's keep it that way. Base dot अब मजा आएगा. Dot lower. Base dot upper, much better. I like it. Now we're talking. Low mids dot lower. Low mids dot upper. Also, Shashwat ke Vim skills are I think much better than mine. Just saying. High mids dot lower. No, also like I type a lot of like I keep pressing the same key for no reason. Kabhi. High mids dot upper. Now I think we are solid. Return. Actually, here is something that I want to do. What are your thoughts on using something like an object pool here? Posted by the way. Oh, मैंने देखा crazy dude. Dude. Oh my god. Thank you, Shashu. Thank you. But I think they do better है. Oh my god, तूने post भी कर दिया crazy. Damn. तेरे को क्या मेरे स्ट्रीम का पोस्ट करने पे तेरे को लाइक्स आते हैं क्या ऑब्जेक्ट पूलिंग हियर वुड बी प्रीमेच्योर ऑप्टिमाइजेशन मैं करूंगा What is calculate band energy? Do we have a function called? तो बता ना मतलब what is calculate band energy, bro? Huh? Instead of slice, just work with indices. Okay. Canvas drawing operations, actual frequency analysis calculations. Object pooling makes sense for large objects with complex generalization. Objects that are expensive to create. The return object is, I bet the Gemini Pro can do it. Object is negligible compared everything in the order pipeline. Fair. Okay, what is calculate? What is calculate band energy here, bro? I think basically खुद ही वो करने को कर रहा है. Oh, expecting me to write. तो तुम किस काम के हो फिर? तो which is faster?
ओ हाँ ये भी है राइट. Not a bad point actually. How efficient are we talking? Because I do actually like that. Calculate band energy or like get band or something like that. Honestly, probably. Oh, actually, I don't mind microseconds. ठीक है देखते हैं. Also, I just realized hi mids. Const hi. Um. Whoa. Nice. Much better. So this is not what we're passing. We're passing basic number होगा. Sorry, एक array होगा. How do you number? Do we call it higher or treble? Are you using JSDoc based? Bro, मैंने नया branch बनाया, इसको मैं V2 बुला रहा हूँ. Are you kidding? Of course I'm using JSDocs. और क्या? मेरे को थोड़ा better prototype बनाना है, bro. अभी ऐसे बच्चों वाले prototype थोड़ी है. Let's call this bands. ठीक है यार, it's fine यार. बेकार में मैं रो रहा हूँ. Okay, let's see, console.log. Frequencies. Also, request animation frame के बारे में भी मैंने थोड़ा पढ़ा. Not using TS really. Oh my god, hi Carla, what's up? Good to see you back, dude. All right, let's freaking go. Okay, so can the amplitude ever really go to 1 is the question. I don't think it can, dude. I don't think root means square. Okay, so what if I just is silent? Interesting. And if I talk, then like interesting. The question is my boy. Yeah, so 0 to 169. What can Gemini Pro do better? Actually, Gemini has like a better context window. So like, oh what? Oh, something's off. Is it off? Whoa, am I doing something wrong again? 262, 170. Why is that? Something's off. Nah, something's off. Length. Oh, idiot. Five 1 2, correct. Oh, I am
Vatra Babu. Of course. Yeah. So the thing is, okay, no. Let's do this. Let us mathsify this, dude. The thing is, my range is something like 0 to 43. So we like that. Yeah. Okay, wait. Nah. We gotta like rectify this. Claude, brother. So I am taking out the slices wrong because my data array would only be 512 bins because my FFT size is 1024. I claim that, and of course, what? How many experience do you have in coding? What is happening? Gemini sucks so much. After Gemini CLI, I can go all day on by. Itna use kar liya, और the thing it did better was TeachMeYank. Oh, dude, you're doing Web3 stuff. I claimed what? I'm old. Okay, little bro. I am old. Yeah. Have you started any programming language? Dude, Shashwat is like what? Shashwat is a programming language. He's not started. He is a programming language. It's already 9, by the way. I do Web3 for money. Else I do systems level stuff. Nice, dude. Are you on Twitter? I think I might know you. What do you do? Do you not go? Frequency to bin. Bro, just give me. Bins 2 to 6. Can you? Oh, this is the. Oh, diya to hai, bro. Lol. The math you need, which is what we've done. Bin width. Oh, right. This is what we need. Okay. And frequency range is. Oh. Oh, wait. Can't remember his username. मेरे को भी याद नहीं. So what is the hertz per bin? And what we're doing over here, Nyquist लेके taking the bin width. Oh, got it. Yeah, this seems correct. I've seen this formula कहीं पे. FFT size would be your frequency bin count. तो तुम्हारा वो frequency कितने इस पे हो रहा है? Yeah, right. उतने bins आ जाएंगे. Nice little function, dude. You know, I might write it myself. You know. Yeah. Function frequency to bin. Sample rate pass कर देते हैं. What else were you passing? What else were we passing? I think that's what we were passing, right? Ujjwal भेज रहा है क्या? But what frequency do we even need to pass over there? An FFT size. Oh, okay, huh. Oh, okay. So, which GSOC guy? What? I code an H. Yeah, dude.
we are technically coding in HTML. I'm a little bit confused, which I shouldn't be. Just 1 second. Okay, we want the number, which is correct. Okay. So this would be just hardcode bin ranges. Can I do it fun? Don't give me artificial. यार इससे अच्छा मैं खुद ही ना कर लूँ. Like what I'm not completely like sure is कि if this number would be correct, which is hopefully one way to find out. Frequency range and audio content sample. Oh, right. Oh, okay. I think we can do this. Sample rate. Okay, क्या था उसमें? Frequency, sample rate, and then we had FFT size, right? All of these would be numbers. ठीक है? Else number of bins for a frequency. So क्या था Nyquist, right? Which would be sample rate का half. ठीक है? Then we had bin width, I believe, which would be our Nyquist upon FFT size by 2. Right? I believe Nyquist का है because like उस yeah. And then we had const bin, which would be our frequency upon bin width. Was it not that? I'm getting it wrong. Oh, yeah, that's right. And math.flow, because why not? Math.flow return bin. Buddy. Frequency apparent number should be our frequency. Sample rate, FFT size, correct, and it returns number, which would be our bin. Now इस पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा because like अगर हम सही bin का range नहीं निकाल रहे तो थोड़ा गलत हो जाएगा. The question is, मैं try. Macro time. Oh my god, let's go. QW.
frequency to win. Boom, boom, boom. Paste. Sample rate. Whoa. FFT. Size. Boom, boom. Magic at W. Shit. Oh, मैं सही था. At W. At W. Let's go. At W. Oh my god, let's go. Macro, guys. Win for the win. Yes. Now I think it should be correct. Oh my god. By the way, 100 subs, just saying. Okay. Pretty great. No one watching, I'm watching, by the way. Okay, by the way, what do you do, Carl? By the way, I do code, tagging on mobile actually sucks. Yeah, true. Okay, I do code, but not professionally. Us finding the sticker took a lot of time. I have these in my frequently used. Okay. Don't abuse. Who's abusing? What? What? Who abused? What a banger response on 100 subs. Dude, मेरे को like I should not care about like फिर like number पे ध्यान दूंगा फिर which I don't want to do. But point. Oh yeah. मैं बेवकूफ हूँ. That is the issue. Correct. Extract range. Nice. So this should work. Who abused? Let me ban him. Leave it. My bad. Both typing and coding like a rocket. Go typing and coding skills. Thank you. I don't think we're doing anything impressive though. Like this is just we're creating objects and whatnot. But like, thank you. Question is 4106 150. If you count this, this should now be 512. So that should be 110, 110, 260, 260. SAR seems in a bad mood. Bro, I'm just मैं थका हूँ bro. ऑफिस से आया हूँ मैं तो like I'm in a very good mood. बस just थका हूँ. Second मैं भूल गया. Bro, hold. Hello, stop, pause, brother. Oh my god. Huh. Okay, that's great. Whoa. Okay. Huh. 110, 260, 272,
Whoa, 272 and okay, 272 and then तुम्हारा 279 plus 40 339, तो तुम्हारे 339 बिन्स हम ले रहे हैं out of 512. Interesting. Can speak English for you. He's not Indian or she's not Indian. I don't know. I would assume car level being stereotypical would be a man. So, can speak English for you? I can speak Telugu also, dude. Just saying. Just saying. एक second. ठीक है. So, खुद ही कैसे start हो रहा है? That's weird. Nice. Okay. So I think we are now good. Okay. Like we have the right stuff being extracted. Point is कि these are still bins. Livestream and international as okay. I mean, where are you from actually? I don't want to. Fair. So India. Kidding, joke. There is a way to do this. So here's the thing. If my ranges, if my bins, if my base range, let's say, represent bins, right? How can I use these to sound properties to manipulate any other entity's property? What would be possible math formulas is the question. Map order ranges to visual property ranges. Damn good. It's like he knew what he was doing. What map range? Visual scaling. Whoa. Color intensity. Map range में क्या कर रहे हैं? Target mainly. What formula is this? Rotation speed. Yeah. Particle count. This is super interesting, dude. Smooth base. अब बैंड एनर्जी तुम फिर लेकर आ जाते हो यार, मजाक लगा के रखा है। Range. So, okay. Interesting. Point is, now let's do some vibe coding. Guys, let's vibe code some stuff. तो इसको मैं पहले ये कर देता हूँ, git add, git commit, audio prototype v2, git push origin v2. Very nice, very nice. Yeah. शाश्वत तू देख रहा अभी. Thank you for staying.
बाय द वे, जब तू खाना खाने गया था तो आई वाज लाइक एक्सप्लेनिंग ऑल ऑडियो स्टफ, तो इन केस यू वांट रिप्ले वी कैन डू दैट. नाउ द थिंग इज, अब मेरे को लाइट प्रॉपर्टीज ठीक से मैनिपुलेट करनी है अकॉर्डिंगली, सो आई विल प्रोबेबली डू दैट ऑफ स्ट्रीम, बिकॉज अभी 9:30 होने वाला है. तो stream wise I think like I'll keep it till here. Baki I think like not bad. I think I know what I'm doing audio wise, so like good stuff, you know. Audio wise I think मैंने like अच्छा code लिखा है and like अब थोड़ा proper better code है, so I'm pretty happy about that. Little bit JS docs, you know. FFT size, we know what FFT size is, you know what okay. What is request animation frame? It's basically one of the native APIs for browser, but basically the thing is it's taking the draw function again, right? So what it does is whenever anything you render on a browser, it paints your pixels, right? So when we're saying request animation frame, you're basically saying that before the next paint, run this callback and then like, you know, see what happens. So because we're calling this, we're running this callback, which is the draw function itself, this will run again, which will call this again, which will call this again, which will call this again. So like it's recursion, but driven by your browser's screen refresh rate. And this would return a ID if you want to cancel. There's like a cancel animation frame. So you would do like const ID, ID, in case you wanted to cancel. But we don't want to cancel. Yeah. No matter how much of you can. Huh? Brother, what? What are you saying, boss? So yeah, I think decent code. Shashwat क्या बोलता है? Code review. You know, I think this is like decent code. अभी के लिए like अभी तो उस पे ऑडियो का मैं पुश करूँगा. तो yeah, you know. It has no effect on this type of thing, brother. Oh, I know why it's saying that, because I am idiot. I should do promise of that and then promise of null, and that will go away. Voila. My bad. क्लॉड का ये सारा मैंने कोड लिखा है ब्रो. क्लॉड क्या तेल लेना है. चलो वो फ्रीक्वेंसी पे अच्छा आइडिया था, बट लाइक बाकी एक्सक्यूज मी, योर्स ट्रूली द क्लॉड, यू कैन हैंडल ब्रेन रॉट कंटेंट. व्हाट? हाँ, कौन सा ब्रेन रॉट कंटेंट? दिस कोड ब्रदर, नॉट क्लॉड. क्लॉड क्या तेल लेना. we have thanked Claude. My code review. Every LLM loves JS. That is true. I think, yeah, that is true. I think, what do we need to do now? Now that we know what we're doing in terms of like audio, because like I think पहले those streams also were just ऊपर जो तूने हाँ तो कुछ इंस्टाग्राम डिसेबल कर दे, डिलीट कर दे. नॉट गुड फॉर ब्रेन, इट इज ब्रेन रॉट फॉर अ रीजन, जस्ट सेइंग. तो द थिंग इज, थोड़ा चैट करते गाइस, व्हाट्सएप तुम लोग को मेन स्क्रीन पे लेकर आता है. लाइक लेट्स जस्ट हैंग आउट गाइस, लेट्स जस्ट हैंग आउट. इनफैक्ट आई थिंक इधर तेज आता है थोड़ा, सो लाइक या क्या चल रहा है गाइस. इनफैक्ट फुल स्क्रीन में भी इवन लेट्स गो. थोड़ा वियर्ड है ब्रो अपने आप को देख के. मैं खुद ही का शक्ल दिखा रहा हूँ अभी, और तुम लोग को नहीं देख रहा ना स्क्रीन. या क्या चल रहा है गाइस. ऑलमोस्ट 2 घंटे ब्रो, नॉट बैड. आई थिंक जिस दिन मैं जल्दी आता हूँ, आई थिंक वी कैन लाइक स्ट्रीम थोड़ा मिड वीक, बट लाइक मेरे को शेड्यूल की तरह नहीं करना. सो दैट्स द थिंग. लाइक वीकेंड पे तो करेंगे, बट लाइक यू नो मिड वीक, लाइक कभी बीच में, नॉट लाइक या फिर देखते हैं. अभी तो लेट्स सी, वीकेंड को पक्का, बट लेगा अदरवाइज नहीं.
Uh, yeah, I think good stream. तो पॉइंट इज मैं क्या बोल रहा था कि जो तुम्हारा लास्ट के 2 स्ट्रीम्स थे, हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि लाइक ऑडियो वाइज कर क्या रहा है, तो डिजिटल उसके बेसिक्स वो क्लियर ही नहीं थे, राइट? बट अभी जो बुक बुक पढ़ा और थोड़ा मतलब करा, तो लाइक आई थिंक लाइक मेरे को समझ में आ गया कि लाइक ऑडियो वगैरह चीज़ें कैसे करनी है, लाइक मेरे को पता मीनिंग वगैरह पता चल गया कि लाइक जो पता होना चाहिए, विच इज व्हाट आई एक्सप्लेन इन द फर्स्ट 45 मिनट्स और जो भी, ठीक है, should probably check that out, not bad. Like कर दो guys, thanks Raj. I should probably like start saying that. Dude, by the way, you guys won't believe, मैं अपने YouTube के stats check कर रहा था, 100% male audience. I just saying, dude, there is zero क्या कहते हैं bias over there. And 41% इंडिया से है, बाकी पता नहीं कहाँ से है. And और क्या था, like channel wise काफी decent growth है, which is a bit surprising, I'm not going to lie. Like 100 लोग अगर सब कर रहे हैं, it's like a thing, not bad. In fact मेरे को bro उस पे वीडियो बनाना है, pragmatic programmer पे. मैं भी स्ट्रीम करूंगा nerdy stuff next month में भी, Mac मिलने के बाद. Why is everyone getting Macs, dude? Just like use Linux, dude. What's Arch Linux, by the way. But like, yeah, if you can stream, dude, I think like everyone should stream. At least code wise, because I think, yeah, it's a good thing. Abhi, like, I think once Shashwat teaches like Shri and Tanu or males, YouTube पे उन्होंने डाला होगा, bro. And I don't think Tanu ने subscribe करा. Like, I don't think. एक I think stream पाई थी बस. That's वो भी जश ने बोला था इसलिए. So I don't think that's happening. I have Linux with ITML, but I have Intel. Oh, okay. Yeah, fair. Yeah, but congrats on the Mac. Let's go. Web3 money, dude. अगर कभी ज्यादा लगे कि ज्यादा पैसे हो रहे, then you can send. So I'll send you my UPI. But yeah. So let's see अभी streaming का कैसे चले. But mainly I want to make a video on pragmatic programmer अभी. So that's there. But that is like all. अभी मेरे को ऑडियो वाला इस महीने खत्म करना है, थोड़ी चीजें जो भी है. In fact जो ये है तुम्हारे all these things, इसको आई थिंक WebSocket के थ्रू मैं कनेक्ट करूंगा थ्रू द ब्राउजर. तो इस पे WebSocket के थ्रू मैं सारे ऑडियो प्रॉपर्टीज भेजूंगा, एंड जो हार्डवेयर की उसमें उसके अकॉर्डिंगली लेट्स सी. अभी प्लान नहीं, लाइक नॉट Web3 मनी, अभी उसको मिल करूंगा. अभी आप GSOC मनी. ओह वेल, कांग्रेट्स ऑन GSOC dude. Yeah, let's go. I think I don't know GSOC, like I thought end में देता है some same specs, but I streamed. हाँ, dude, Shashwat also like yeah streams by the way now. शाश्वत हमें लाइक अब को स्ट्रीम करना चाहिए, समझ रहे हैं? ठीक है, साथ में भी स्ट्रीम करेंगे लाइक तेरे चैनल पे अपने चैनल पे, एंड लाइक एकदम प्राइम टीजर मोमेंट, एक दूसरे के चैट में आएंगे और पता नहीं क्या बकवास, सेम कॉल में रह के स्ट्रीम करेंगे. विल बी फन. तो चल 9:30 हो गए. आई विल एंड स्ट्रीम. गुड स्ट्रीम. आई थिंक लाइक वी नो, आई थिंक गुड प्रोग्रेस नॉलेज वाइज, कोड वाइज आई थिंक बेटर कर रहा है. अब ऑफ स्ट्रीम में थोड़ा और करूंगा, विच इज लाइक कैनवस स्टफ, जो मेरे को थोड़ा फिगर आउट करना है, बट उस पे ज्यादा टाइम लोगों के लिए नहीं लगना चाहिए. सो लेट्स सी. फर्स्ट गेट OBS इज देयर, बट लाइक वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना है, तो विल डू दैट वीकेंड को या कभी. तो रेड मारेंगे यार डूड. इनफैक्ट लाइक अगर OBS हो गया, देन लाइक ट्विच और YouTube पे लाइक साथ में स्ट्रीम कर सकते हैं. तो लाइक आई थिंक दैट वुड बी गुड आइडिया कि लाइक ट्विच पे भी साइड में चल रहा है, एंड देन YouTube पे भी चल रहा है. So yeah, that's right. So anyway, I will end stream. Thank you all for joining, and yeah, bye bye, dude. Audio stuff, dude. Bye.